Hi friends, welcome to Cathy का kitchen. Please subscribe my channel and also click bell icon to receive notification. आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी. इन ए पैन ऐड ऑयल. इसे गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे स्लाइस्ड ऑनियन एंड सौते इट वेल फॉर 6 to 8 minutes. अब इसमें हम डालेंगे फ्रेशली क्रश्ड ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक और इसे अच्छी तरह मिलाकर इसे पकने देना है. Little curry leaves in it. ऑनियन और जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसालास लाइक धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर और मटन मसाला. इट इज़ ऑप्शनल. ऑल्सो ऐड 1 teaspoon सॉल्ट इनटू इट. इसे 4-5 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियंस एंड लेट इट कुक वेल इन द मसाला. प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर इंग्रेडिएंट्स. अब हम इस लिड को क्लोज करके इसे अच्छी तरह पकने देंगे. अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड ब्राउन ऑनियंस और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे. अब हम इसमें डालेंगे दही. दही को इसमें अच्छी तरह से मिलाना है. इसमें हम पका हुआ मटन डालेंगे. मटन को ज़रा सा चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर और ज़रा सा नमक डालकर प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक पकने दिया है. मसाले को मटन के साथ अच्छी तरह मिला के क्लोज द लिड एंड कुक इट फॉर 10 minutes. Now our masala is ready.
Now we will add 80% cooked rice in it layer by layer. इसके ऊपर हम डालेंगे लिटिल घी, फूड कलर, रोज़ वाटर, राइस वाटर, ब्राउन ऑनियन एंड लिटिल गरम मसाला और इसे हम स्लो फ्लेम में 25 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Our mutton biryani is ready. Now dish it out.